हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव विद सुदीप्ता। तो इस वीकेंड को हम एक्चुअली कहीं पे नहीं गए। आई एम डाउन फॉर लास्ट 2 days और ही वेंट फॉर अ ट्रेक यस्टरडे। उसके पैरों का हालत बहुत ख़राब है, ही कांट इवन वर्क। तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम जहाँ पे रहते हैं उसका वीडियो तो अभी तक बनाए नहीं, दो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, दैट्स दुबई मेरीना। येस, यू आर करेक्ट, इट्स दुबई मेरीना, वी आर स्टेइंग देयर। तो अभी हम चलते हैं इवनिंग वॉक के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं जगह को, थोड़ा सा सनसेट एंजॉय करते हैं। मे बी आफ्टर दैट आई विल फील मोर रिफ्रेशिंग, सो रादर देन वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गो देयर। एंड इफ you haven't subscribed my channel yet, don't forget to like, share and subscribe it. Well, we have reached there. आपको ब्रिज के नीचे से जाना है। आप अगर ऊपर से जाओगे so you will directly go to JBR beach. कैन यू हियर द नॉइज ऑफ द विंड? एक्चुअल में बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत तेज़। Hey, see this. There are multiple water activities are going on. So these boats are for that only. There are multiple luxury yachts, boats and dinner cruises. If you want to go for any of the ride, you can book them. हमें तो अभी जाना नहीं है किसी में भी, so yeah, we are going to skip that one. The route is immaculately clean, neat and tidy, and colorful too. Well, all countries have beautiful places, but you have to admire the cleanliness of Dubai. And this harbor water looks so clean enough to swim. वेल मुझे एक्चुअली दुबई में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है ना, दैट एवरीथिंग लुक्स ब्रांड न्यू, वेदर दोज आर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, वॉकवेज, लैंडस्केप, वाटर, everything looks so neat and clean and perfectly constructed. वेल दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट, इट्स एक्चुअली द ट्रांजिशन टाइम। सनसेट हो रहा है और हर एक बिल्डिंग का, हर एक क्रूज़ का, बोट्स का एक के बाद एक बस लाइट ऐसे ऑन होते जा रहा है। यहाँ बैठ के सनसेट एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और है, सो रिलैक्सिंग।
एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक. आपको हर तरफ दिखेगा कोई ना कोई ऐसे दौड़ रहा है. एंड यू नो देर आर मल्टीपल कैफ़ेज एंड रेस्टोरेंट्स, सो यू कैन कम with your family, friends, you can chill out with them. It will give you a very refreshing vibe, to be very honest. It's a very fresh vibe. ब्रिज के नीचे बच्चों के लिए भी एक छोटा सा गेमिंग एरिया बनाया हुआ है, सो दैट दे कैन प्ले एंड एंजॉय हियर. यहाँ से आप अगर अच्छे से देखो तो आपको इन दुबई का विल भी दिखेगा, विच इज़ इन ब्लू वाटर आइलैंड. और ये जो सारे बोट्स आप देख रहे हो ना, तो दिस विल गो टू ब्लू वाटर आइलैंड ओनली. So if you have a plan to visit Blue Water Island, this is also a very good option that you can book a ride from Marina. That can be as per your own choice, whether you want to travel by boat, cruise or yachts. That's up to you. I was feeling more relaxing and more refreshing in the fresh air. After experiencing a nice walk tour in this man-made marina, I have captured the beautiful night view of the city in my memory. Now it's the time to go back to home. There is so much beauty when your eyes lay lost in all the city lights. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe my channel. We'll see you in the next vlog. Till then, goodbye.